પત્રકાર પરિષદ સંબોધી રહ્યા છે. ચાલો સીધાજી શું કહી રહ્યા છે? is not interested in having a discussion. I've already said it before. The Prime Minister is personally terrified of me being allowed to open my mouth inside the Lok Sabha, because I have information on the Prime Minister that is going to explode his balloon, and I am not being allowed to speak in the House. So I would request the government to allow the entire opposition to speak in the House, because he owes this country an explanation. He has taken a decision against the poor people of this country. He has destroyed millions of lives, and he is answerable. He has personally taken this decision, and he cannot keep running away from the House. He cannot keep running away to pop concerts, to public meetings. This is a democracy. He owes the country an explanation, and he owes us, the entire opposition, a space in the discussion in the Lok Sabha. हिंदी में एक महीने से पूरा ऑपोजिशन, सब पार्टी लोकसभा में चर्चा करनी चाहती है. यहां पे हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं. सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें. प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं. प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा, और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं. हमने स्पीकर से कहा है कि सब के सब रूल्स आप डिस्पेंस कर सकती हैं, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को जगह दे दो बोलने की. यह हमारा हक है. उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं, आप दीजिए. मगर यह हमारा राजनीतिक हक है. हम चुनकर आए हैं, हम सब एमपीज हैं. यह हमारा हक बनता है कि हमें वहां बोलने दिया जाए. और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं. कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं. हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस, सरकार चर्चा को रोक रही है. नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है. पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए. प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर, और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए. फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं. धन्यवाद. अब ऑपोजिशन કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી પૂરા અગ્રેસન મોડમાં જોવા મળ્યા અને સ્પષ્ટપણે વડાપ્રધાનને ચેલેન્જ કરતા જોવા મળ્યા. અને ખાસ કરીને તેમણે કીધું એ પ્રકારે પહેલી વાર એવું થયું છે દેશમાં કે સરકાર પોતે વિપક્ષે બોલવા નથી દેતી. આ કેવું છે રાહુલ ગાંધીનું. મોટે ભાગે એવું થતું હોય છે કે વિપક્ષ ચર્ચાને રોકતું હોય છે, પરંતુ આ વખતે પહેલી વાર સરકાર ચર્ચાને રોકે છે રાહુલ ગાંધીના કહેવા પ્રમાણે. એટલું જ નહીં, રાહુલ ગાંધી તે પણ કીધું કે મારી પાસે પ્રધાનમંત્રીની અંગત માહિતી છે. અગર જો તેમને બોલવાનો મોકો આપવામાં આવશે તો એ તમામ ફુગ્ગા ફૂટી જશે અને ત્યારબાદ પબ્લિક, લોકો નિર્ણય લેશે કે વિપક્ષ સાચું છે કે પછી સરકાર સાચી છે. જે પ્રકારનો નોટબંધીનો આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેને પૂરેપૂરી રીતે રાહુલ ગાંધીએ વખોડી નાખ્યો છે અને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આ નિર્ણય સીધે સીધો લોકોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. પરંતુ પ્રધાનમંત્રી અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને ભાષણ આપે છે, પરંતુ સંસદમાં કશું જ બોલવા કેમ તૈયાર નથી? આ
આક્ષેપ કર્યો છે, આ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ. છેલ્લા એક મહિનાથી વિપક્ષ લોકસભામાં ચર્ચા કરવા માંગે છે, પરંતુ પીએમ અને સરકાર આ ચર્ચાને ઈચ્છતું નથી. માત્ર એટલું જ નહીં, રાહુલ ગાંધીએ એવું પણ કીધું કે મને પોતાને પણ બોલવા દેવામાં નથી આવતો. હું લોકસભામાં બતાવવા માંગુ છું, મને બોલવાનો મોકો નથી આપવામાં આવતો. वो नरेंद्र मोदी जी पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैं लोकसभा में रखना चाहता हूं. Because I want to say it in the Lok Sabha. I am a member of Parliament. I have been chosen by the people of India. मुझे हिंदुस्तान अमेठी के लोगों ने चुना है. मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं. मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं. प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है. देखिए, it is our right to speak. The Prime Minister, listen, the Prime Minister, read my lips, the Prime Minister is personally terrified with the information that I have, that we have with us. It is personal corruption of the Prime Minister. It is personal corruption of the Prime Minister that we have detailed information on. नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है. हम उसको रखना चाहते हैं. हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं. लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे. धन्यवाद. No, I want to repeat. We cannot understand why so arrogancy on the part of the government. The voice of the opposition is going to be dead. And parliamentary democratic system is now going under threat. Only to resist. Because he owes this country an explanation. He has taken a decision against the poor people of this country. He has destroyed millions of lives. And he is answerable. He has personally taken this decision. And he cannot keep running away from the house. He cannot keep running away to pop concerts, to public meetings. This is a democracy. He owes the country an explanation, and he owes us, the entire opposition. एक महीने से पूरा ऑपोजिशन, सब पार्टी लोकसभा में चर्चा करनी चाहती है. यहां पे हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं. सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें. प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं. प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं. हमने स्पीकर से कहा है कि सब के सब रूल्स आप डिस्पेंस कर सकती हैं, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को जगह दे दो बोलने की. यह हमारा हक है. उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं, आप दीजिए. मगर यह हमारा राजनीतिक हक है. हम चुनकर आए हैं, हम सब एमपीज हैं. यह हमारा हक बनता है कि हमें वहां बोलने दिया जाए. और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं. कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं. हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस, सरकार चर्चा को रोक रही है. नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है. पहली बार हमने देखा
कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए। फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। धन्यवाद। अब ऑपोजिशन तो पीएम मोदी डरी